आम हस्ते आटिकमालिकं विदधतिं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। भवतु अग्रे गच्छामः। So we finished लोपशाकल्यस्य वान्तोयि प्रत्यये in the context of echo yava yavah, right? So I will give some example. Tasyai plus idam is equal to tasya idam or tasya idam. Guru plus adisha is equal to guravadisha or gura adisha. Kate plus upaveshanam, katayupaveshanam, katayupaveshanam or kata upaveshanam. Vadane plus aushadham, vadanayaushadham or vadana aushadham. Karau plus etau, karavetau, karavetau or kara etau. Balau plus ojaswini, bala vojaswini, bala vojaswini or bala ojaswini. Guru plus utsaha, guravutsaha or gura utsaha. Narau plus udarau, naravudarau or nara udarau. Okay. So then we studied Guna Sandhi and Vriddhi Sandhi. We understood yesterday. Guna Sandhi adeng gunaha at eng cha guna sangyah syat. The first letter will be a or a, and the second letter can be ik pratyahar, e u real ri. That is guna sanya. The outcome is a, o, r, and al. Okay, a, o, r, and al. That is guna sandhi. A, o, r, al. And vriddhi sandhi will be the remaining vowels a plus I, au, sorry, a, I, o, au, ri, and ri. Ri and ri are common in Guna Sandhi as well as Vriddhi Sandhi, but Guna Sandhi has e and u, and Vriddhi Sandhi has a, I, o, o. This is the only difference. Clear? So let's take a look of the examples. Vriddhi Radech. At echi pare Vriddhi Rekadesha syat. A after a and a. If it is h pratyahar. A ong I ouch. This is h pratyahar. So a I o o. If that is there, then it will become I, au, r, and al will be the output that we have discussed yesterday. For example, Krishna plus ekatvam, Krishnaikatvam. Deva plus Aishwaryam, Devaishwaryam. A or I will become I only. Now take a look of O and Au. Tasya plus Odanaha, Tasyaudanaha.
This is Vriddhi Sandhi. Tasyaudanah. Ganga plus Ogha is equal to Gangaugha. Same. Vana plus Aushadham. It is Au. It will become Vanaushadham. Maha plus Autsukyam. Autsukyam means curiosity. Great curiosity. It will become Mahotsukyam. So simple. Both for Guna Sandhi and Vriddhi Sandhi. In brief, in Guna Sandhi, A will be the first letter. Same in Vriddhi Sandhi, A will be the first letter. In Guna Sandhi, the second letter Paravarna can be E, U, Ri and Ri. When it is Paravarna is E, it will become A. When it is U, it will become O. When it is Ri, it will become Ar. When it is Ri, it will become Al. Clear? But in Vriddhi Sandhi, same. The Purva Varna will be A or A. But this Paravarna can be A or I, O or O, Ri and Ri. So Ri and Ri are common in Vriddhi Sandhi as well as Guna Sandhi. So whether it is A or I, it will get converted into I only. Whether it is O or O, it will get converted into O only. Like Vana plus Aushadham is equal to Vanaushadham. Or Tasya plus Odanaha is also Tasyaudanaha. Okay? Ri will become R. In Guna Sandhi, it will become Ar. Here it will become R. So let's see some example. उप प्लस रिच्छति हाँ. शति हाँ. प्रासभ्यति. हाँ. Pra plus Rinam, Praranam. Pra plus Rinam. Ri became R. Praranam. Similarly, Lri. Upa plus Likari Riyati. Li will become Al. Upalkariyati. 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 Okay? So Li will become Al. So Guna Sandhi and Vriddhi Sandhi is clear for everybody? Yes. हिंदी में भी बोल दीजिए. हिंदी में भी बोल देता हूँ. तो गुण संधि में क्या होता है कि पूर्व वर्ण हमेशा आ या आ रहेगा. वृद्धि संधि में भी पूर्व वर्ण आ या आ ही रहेगा. गुण संधि में परवर्ण ई हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है और लरी हो सकते हैं. ये चार हो सकते हैं. जब ई होगा तो ए बन जाएगा. जब परवर्ण उ होगा तो ओ बनेगा. जब परवर्ण ली होगा तो अर बनेगा. जब परवर्ण री होगा तो अल बनेगा. लेकिन वही वृद्धि संधि में आ के बाद अगर ए आए चाहे आई आए, हमेशा आई ही बनेगा. ठीक है? आ के बाद ओ आए चाहे औ आए, औ ही बनेगा. क्लियर? फिर आ के बाद अगर री आता है तो आर बनेगा और आ के बाद री आता है तो आल बनेगा. जबकि गुण संधि में आर अल बनता है, लेकिन दीर्घ वृद्धि संधि में आर आल बन जाता है. यही डिफरेंस है. री और री दोनों में ही कॉमन है. गुण संधि और वृद्धि संधि में दोनों में कॉमन है. लेकिन गुण संधि में री का अर बनता है और री का अल बनता है, और वृद्धि संधि में री का आर बनता है और री का आल बनता है. आगे बात समझ में सभी को? नटरानी, पंकज, शरणागति दीदी. यस प्रभु जी, आगे समझ लीजिए.
हाँ, समझ में आ गई। ठीक है, तो यही कल भी हमने इसी पे चर्चा किया था। आज हमने दोबारा रिकैपिचुलेशन कर दिया। अब देखिए, अब सवर्ण दीर्घ संधि में हम प्रवेश करते हैं। इसमें प्रभु जी एक चीज और थोड़ा समझा दीजिए। हम्म। जो उपप्रतिष्ठति उपार्क्षति, तो एक 1 नंबर उपसर्गा धृति धातु हम्म। 6.1.91 अवर्णा साधु, ये सब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जैसे कहाँ दो पे है? नंबर में भी दिया है, उसी में कतिपय विशिष्ट उदाहरणानि एतेषु हम्म। पूर्व स्थाने वृद्धि भवति, वो जो हम्म। एग्जाम्पल आए हैं उसमें हम्म। 1 2 3 4 करके इन्होंने फिर फुटनोट दिया है। ठीक ठीक, देखिए, प्रायशः, प्रश्यः इत्येतद्द्वयं विहाय उपार्चति इत्यारभ्य सुखार्थः इत्यन्तं यावत् गुणः प्राप्तः, गुणा गुणापवादत्वेन वृद्धिर्विहिता। प्रैषः प्रश्यः इत्यत्र तु पररूपं प्राप्तं तस्यापवादत्वेन वृद्धिर्विहिता। एषः एष्यः इत्यनयोः धातु निष्पन्नत्वात् पररूपं प्राप्तम्। ये सब एक्सेप्शंस है। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, उप, प्र, अक, उप, प्र, ये सब उपसर्ग है। दिस आर प्रिफिक्सेस। ओके, सो प्र प्लस एषः, प्र प्लस ऐष्यः, प्र प्लस एधते, प्र प्लस एति। सो दे आर सेइंग प्र प्लस एषः, it will definitely be vriddhi sandhi because a I o o comes in vriddhi sandhi. Okay, pra plus rinam, why they did prarnam, why not prarnam? Okay, this is the question. Number 6. This I will explain one by one. It says praishaha and prashaha ityetadvayam vihaya, except praisha and prashaha uparchati ityarabhya sukhartah इत्यंतम यावत गुणः प्राप्तः. So apart from upa and richati, pra plus rishabhiyati, apart from these two, all are supposed to have guna sandhi. Okay, they are all falling under the category of guna sandhi. But instead of doing guna sandhi, we have done vriddhi sandhi. Now each case is different. Why? Gunapavadattvena vriddhir vihita. So these were supposed to get guna sandhi, but because they are apavad means exception, that's why we have to do vriddhi sandhi. Praishaha, prashaha ityatra tu pararupam praptam. Pararupam praptam. Tasyapavadattvena vriddhirvihita. Pra plus eshaha and pra plus eshaha. In these two cases, there is a pararupa sandhi. Pararup means the first purva varna gets connected with the paravarna naturally. This is pararup sandhi. And in purvarup sandhi, the paravarna gets connected naturally with the purva varna. Eshaha eshaha ityanayoho dhatu nishpannatvat pararupam praptam. So now, out of all these, upa plus richati and pra plus rishabhiyati, these two vihaya, except these two, all the examples has been given. They have all the capacity to do guna sandhi. And gunapavadatvena vriddhir vihita. See here, it's making clear that vriddhi sandhi is a part of guna sandhi. When you are getting the letter A, so definitely A is going to the vriddhi sandhi. A is not considered in guna sandhi. So naturally we have to do vriddhi sandhi. But here they are saying that we are doing vriddhi sandhi as a part of guna sandhi. गुणापवादत्वेन वृद्धिर्विहिता. प्रैषः प्रेष्यः इत्यत्र पररूपं प्राप्तं तस्यापवादत्वेन वृद्धिर्विहिता.
and pra plus eshaha and praishaha. Eshaha and eshaha ityanayo dhatu nishpannatvat paraprupam praptam. So if you say that pra plus eshaha is praishaha, it is getting pararup sandhi. So similarly, pra plus edhate should also get no. They are saying that eshaha and eshaha, these are the two words generated from dhatu. So their rules are different than others. There are many subdivisions. Listen carefully. Now, number one. Number one is what? Upasarga Dhriti Dhato. Upasarga. This is a new 1.991. plus richati is equal to uparchati and pra plus rishabhiyati, prashabhiyati. You can see here they have done vruddhi sandhi. Why? Because there is a particular sutra coming here for these two cases. Upasarga dhriti dhato. So avarnantad upasargat rikarado dhato pare vruddhir ekadeshah syat. So wherever there is a pra upasarga, there are 20 upasargas. Out of that, when there is a pra upasarga at the beginning and the latter is a dhatu starting with the letter Ri. So you can see here upa plus richati, pra plus rishabhiyati. So richa, rishabha, these are derived from dhatus. So when there is a pra upasarga, it's a particular instruction. There is no rocket science. Where there is pra upasarga and after that there is a rikaran, there is a dhatu which is starting with Ri, you have to use upasarga dhriti dhatu. With this sutra, only you can do vruddhi sandhi. Guna will not be accepted. So this sutra specified that even though there is a potential of guna sandhi, but upasarga dhriti dhatu stopped having guna sandhi and it instructed clearly that you must have वृद्धि संधि. आई बात समझ में? तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब प्र उपसर्ग पहले हो और कोई धातु हो जो रीकार से शुरू हो रहा है, जैसे ऋषभीयति, ये ऋषभ शब्द धातु है, और ऋक्ष प्र प्लस ऋक्षति, तो ऐसा कंडीशन जब आए पूर्व वर्ण प्र उपसर्ग हो और परवर्ण री से प्रारंभ होने वाला धातु हो, तब उपसर्ग धृति धातो हो. इस सूत्र से आपको वृद्धि ही करनी पड़ेगी, आप गुण होने पर भी नहीं कर सकते. जी, वेरी क्लियर? हमने क्लियर हो गया. जैसे कल हम बात कर रहे थे कि बिकॉज देर इज ओनली दिस डिफरेंस दैट आर एंड आर राइट फ्रॉम दी, तो दीज आर दी सूत्रास विच आर निषेध कर, जो उसको आदेश दे रहे हैं कि ये करने का, राइट, ओवरराइड कर रहे हैं कि हमें यही करना है. लेकिन कल जैसे हम बोल रहे थे कि लैंग्वेज, हमने बाय दिस इज द डिफरेंस वी आर सेइंग अबाउट लैंग्वेज आल्सो, बिकॉज व्यासदेव जी हैज रिटन दिस सो इट कैन बी यूज्ड एंड नाउ दिस आदेश आर सुपरसीडिंग दोस थिंग्स, राइट? Right, exactly. Now see, there is one specific sandhi, upa plus lrikariyati. Upa plus lrikariyati. So lrikariyati, this is one example of lrikar. It becomes upalkariyati. It became vruddhi. Al is vruddhi. If it was al, it was guna sandhi. So now, why they had to do vruddhi sandhi? Then it's saying va supya pishalehe. This is a particular sutra. Va supya pishalehe. This is why I'm saying this. Having this book is very important. Otherwise, it's difficult to understand.
Va supya pishalehe. This particular sutra is giving a particular instruction. What instruction? Avarnantat upasargat rikarado dhatu pare vriddhir ekadesho vasya. Okay. It's saying that when there is avarna, upa is having a at the end. Okay, upa is having, even though it's a prefix, but it's ending with a. So in sandhi, we take the last letter into consideration. So a is there and paravarna is lri. So when there is upasarga is there and letter is starting with lrikar, but it is derived out of a dhatu. Okay, it has to be a dhatu. So here lrikariyati, lrikariyatah, lrikariyanti. This is from Churadi Ganam of dhatu. So this is a typical dhatu, lrikariyati. Lrikariyati means the way Krishna stands bent, that is lrikariyati. So upalrikariyati. Here, if such condition happens, vriddhir ekadesho vasya. Look at the language. Vriddhir ekadesho vasya. Vriddhi is ekadesh. Ekadesh means where there are two letters get conjoined and turns into a single one. And ekadesho vasyat means it can have vriddhi sandhi or it may not have vriddhi sandhi. That means it can have guna sandhi also. Va means vikalpa, alternate. As an alternate, upal kariyati or upal kariyati. Both can be understood here. Okay. So this is a va supya pishalehe, a special instruction. Only you write down the sutra and write down in your own language, then you understand it. Then number 3, akshauhini. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उप का आ है और बाद में लृकार्यति, लृकार से प्रारंभ होने वाला एक धातु है, धातु का रूप है. तो ये शब्द नहीं है, ये धातु है. तो जब उप हो पहले और बाद में लृकार वाले कोई धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होगी. एक बार वृद्धि होगी और दूसरे बार गुण संधि होगा. विकल्प माने इधर और, एक बार ये होगा दूसरी बार वो होगा. क्लियर नटरानी? तो ये समझ में नहीं आया. एक बार संधि होगी और दूसरी बार वृद्धि, मतलब दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है. हो सकते हैं. देखिए बहुत सारे सूत्र हैं, मैंने कहा ना 6 प्रकार के सूत्र हैं, इसीलिए पहले जो संज्ञा प्रकरण पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका बेस नहीं होगा, उसको अगर अभ्यास नहीं किया है तो यहाँ पे सब कुछ नया लगेगा, क्योंकि नीचे का ईंट अपने गथनी अगर अच्छी तरह से नहीं किया तो ऊपर आप फिसल जाएंगे. इसीलिए मैंने 1 महीना लगाया सिर्फ संज्ञा सूत्र को पढ़ाने के लिए. तो उस समय मैंने पढ़ाया था संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम. तो देयर आर 6 काइंड ऑफ सूत्र: संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, आदेश सूत्र, नियम सूत्र, etc. So here there will be certain sutra which will say in this case you do this echo yavayava. Then there is a sutra came, it says lopah shakalyasya. Lopah shakalyasya said you can eliminate ya and va. Then there is another sutra came, purvatra siddham. Purvatra siddham says if you use the sutra which is out of the saptadhyayi, if you once use them,
you cannot reuse any of the previous sutras. So after doing Lopah Shakalyasya, Hara plus Agacha, there was a chance A plus A is equal to A, Haragacha. But because Purvatra Siddham said no, after you use those sutras, previous sutras are all asiddha. They're all unbona fide now. You cannot apply them. So it will remain standing as it is. So they are a different kind of sutras. When there is va, I studied in what is that? In Sanya Prakaran, va, vibhasa, vikalpa, anyatarasyam. These words, whenever they come in sutra, it's saying as an alternate, either or. So here, upasarga dhriti dhatu says if there is a pra or upa at the beginning, but another condition is there. See, there are 20 upasargas: pra, para, apasama, anu, nir, dur, bhi, ut, pari, prati, api, abhi, api, upa, ang. Nir, nis, like that. But nir, nis, these are not akaranta upasargas. Those upasargas ending with a, pra ending with a, upa ending with a. If you remember in the beginning, I taught you that the ending is very important. नकारांत लकारांत याद है कुछ? कोई कुछ? यस। आप तो कि कोई कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? हाँ यस यस, ये पढ़ाए थे और हम लोगों ने रिपीट भी किया है। हाँ, तो पीछे का आप अभ्यास करते रहेंगे तो आगे का और ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आज का छूट गया कोई बात नहीं, कल समझ लेंगे तो हो गया बस। अब क्या मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि उपसर्ग 20 हैं, उसमें से जिन उपसर्ग आकार से अंत होता है, जैसे प्रा आकार से अंत हुआ, उप आकार से अंत हुआ, लेकिन परा आकार से अंत हुआ, निस सकार से अंत हुआ, तो ऐसा नहीं चलेगा जो आकार से अंत हो। अवर्णात उपसर्गा लिखा है, देखिए अवर्णात उपसर्गा। सो द पूर्व वर्ण हैज टू बी ए प्रीफिक्स व्हिच इज एंडिंग विथ आ। इससे सरल भाषा क्या बोलूं मैं? देन इट्स सेइंग रिकारादो धातो परे। आफ्टर दैट इफ देयर इज अ धातु नॉट ए शब्द, now don't ask me what is dhatu and shabda, this I taught. Rikar, starting with rikar, and it's a dhatu. In that particular case, vriddhir ekadeshah syat, that can only have vriddhi sandhi. That means they excluded guna sandhi. When they are emphasizing on vriddhi sandhi, that means they are denying guna sandhi. Why is it so? Why is it so? कल पढ़ाया था। language, because Vyasdeva has written this, so we have made. ये क्वेश्चन दोबारा पूछ। तुम ही तो बोल रही थे नटरानी कि गुणापवा वृद्धि, भूल गई? क्वेश्चन नहीं सुना था। हाँ तो क्वेश्चन ध्यान दो ना, फिर मैं सबके लिए अलग अलग थोड़ी बोल सकता हूँ, ध्यान दो, बहुत अटेंटिव रहो। व्याकरण की क्लास में एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का जो विषय है इसमें तो बहुत ठूस ठूस के सिद्धांत दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनो और वीडियो को 4-5 बार देखो जरूरत पड़े तो। मैं क्या कह रहा हूं कि क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जब वृद्धि एकादेश स्यात् कह देंगे, when they are saying वृद्धि एकादेश, that means only वृद्धि। When they are saying only vriddhi, why they have to say only vriddhi? Why do you have to say only vriddhi? This kind of question a Vaiyakaran, a student of a grammar should think. Why they have to say only vriddhi rekadesha, only vriddhi? That means there is a possibility of second. Huh?
क्या बोल रहे हो? Because they are started with O Varna. No, 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 no. उपसर्गा उपसर्गाद रति धातु. You are not getting my question. What I am saying, वो हम छोड़ के आ गए. अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं वृद्धि का ही एक आदेश होगा. तो वृद्धि का ही एक आदेश होगा, इसका कहने का क्या तात्पर्य है? भाई हम कह रहे हैं कि सिर्फ सर्वदेव का ही निमंत्रण रहेगा. तो इसका मतलब क्या समझे? केवल सर्वदेव हैं? केवल सर्वदेव ही जाएंगे ना निमंत्रण के लिए. तो उसका क्या अर्थ हुआ? और कोई There is something special कि वो ब्रह्मचारी है. Like I am asking only for ब्रह्मचारी. अपवाद 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 है कुछ. भाई हम जब बोल रहे हैं कि सिर्फ सर्वदेव का ही निमंत्रण रहा, वो मेरे घर में आएगा भोजन करने, मतलब मैं बाकियों को मना कर रहा हूं, ये बोलना पड़ेगा उसको. सो व्हेन आई एम इनवाइटिंग ओनली सर्वदेव, दैट मीन्स आई एम denying. That means there are other people also who are potential to get this invitation. You are all my students, but I am saying particularly to Sarvadev that I am announcing that tomorrow there is a feast and Sarvadev is invited. That means what? That means I am denying all other 10 students. So when there is a denial, that has to be mentioned in the sutra. वृद्धिर एकादेशो स्यात्, वृद्धि ही होगी और कुछ नहीं होगा, ऐसा कह रहा है. मतलब when I am saying, suppose 2 students are there and I am saying Sarvadev will come, that means there is a chance of coming 2 students. Sometimes we invite only one member from the family. So what we say? One person of each family is invited. That means there are 5-6 members. I am only choosing one, the guardian. That means I am denying others. Why? Because there is a potential. The invitation can be for everybody. But when I am making very prominent that only one person of your family is invited, that means I am denying the others. So when I am saying vruddhi only, that means I am saying other chances are not there. That means there is a chance of guna sandhi also. This is the what you have to understand. Is it clear enough? Yes, sir. yes sir. Simple English. Don't worry that only Hindi comes, then only we will nod our heads. It's not like that. I'm speaking in very simple English and explaining very simply, so you can understand. When the sutra is saying Vriddhi Ekadesho Syat, that means there is a chance of some other sandhi also, that the sutra is stopping Nishedh and Vidhi. See, this is a kind of sutra which has 2 potential. It is saying do Vriddhi sandhi and it is rejecting not guna sandhi. You understand? So Vidhi and Nishedh both are coming here in the sutra. This is very important, interesting thing. Is it clear, Natarani? Yes, sir. Acha. Why am I teaching you this? If you understood this, then the second sutra you will understand. If you have not understood this, second sutra you won't understand. Now go to the second sutra. First condition was that, see, I'm repeating, be careful. I'm repeating, when there is any upasarga, but that is ending with a only. So here there is a discrimination. What discrimination? I'm saying ki as many students are here, those who are first initiated, they are invited. Second initiated, they are invited. So that means those who are first initiated cannot attend the program. Is it clear? आई ना बात समझ में? तो yes. हाँ, तो यहाँ पे क्या है? 20 उपसर्ग है, प्रापरा पसम अनु निर्दुर्भी उत्सु परिप्रति अपि अभि उपांग. So there are 20 upasargas, but now it is saying that the upasargas ending with a. So that means
pra and upa. These are the only two upasargas ending with a. So see the style of grammar. Avarnat, avarnantad, ri upasargat, avarnantat उपसर्गात. जो उपसर्ग आवर्ण से अंत होते हैं उनका ही ग्रहण किया गया. नंबर 1. नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है कि द सेकंड लेटर हैज टू स्टार्ट विथ री बट हैज टू बी ए धातु. ओके, सो इफ आई सी लाइक रिच्छति, ऋषभीयति, these are dhatu. But if I say Rishabdev, this is a name, this is a shabda. But Rishabhiyati, Richati, these are typical dhatus. Lat, lakar, pratham purush ekvachan. So when there is pra or upasargas which is ending with a, and there is a dhatu starting with ri, in this cases strictly you have to do vruddhi sandhi. There is no question of guna sandhi. That means guna sandhi is denied, because ri and lri are both a part of guna sandhi as well as vruddhi sandhi. बात को समझिए, री और लरी एक ऐसा पेच है जिसमें गुण संधि भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है. तो री और लरी ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी जब भी और री का क्वेश्चन आएगा तब उस सूत्र में बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा कि यहाँ पे हमें करना क्या है. गुण को लेना है, वृद्धि को छोड़ना है, या वृद्धि को लेना है, गुण को छोड़ना है. राइट? Yes. Very good. Now see the second question. So upasarga dhriti dhato, this is a sutra of 6th chapter. I have explained. Okay, you write down now, or when you listen to the recording you write down then, but write it down. After writing down, if you forget also, as soon you will see second time you will remember. But if you don't want to write it down, it will become unknown for you. So writing has a very good impact on the brain. Next thing, va supya pishale. Va supya pishale is the sutra. This sutra is from 6th chapter, same chapter. See, it is giving instruction avarnat upasargat rikarado dhato pare vruddhi rekadesho sat. Here there is a same condition. See, avarnat upasargat rikarado dhato pare. Same thing they are saying what they said in the previous sutra. There should be upasarga which is ending with a, and the latter is a dhatu starting with rikar. So ri is also counted as ri. Ri varnayor mitho vachyam. This we studied. प्रभु जी एक चीज जरा बताइए, तो इसको अगर हम संधि छेद करें, अवर्णा तो अवर्ण हो गया, अंत मन अंत, नहीं अवर्णंता. हाँ, तो इसको अवर्ण हुआ ना, वर्ण अंत होना चाहिए. सुनिए, अवर्णांत एक शब्द है, अवर्णांतात पंचमी विभक्ति हो गई. अवर्णांत ना, इसका मीनिंग होगा कि ये अंत हो रहा है ना अवर्ण, क्या समझ? हाँ. अब फिर इसमें इसको भी ये उपसर्गात, इसमें भी पंचमी विभक्ति. सर्गात तो होगा ना. उपसर्गात. हाँ, ये झलाम जशोंत एक सूत्र है, आगे मिलेगा आपको. सुनो मेरी बात सुनो. एक सूत्र आएगा आगे, वो व्यंजन संधि में आएगा, जो झलाम जशोंते, वो क्या करेगा, झल प्रत्याहार परे रहने पर माने प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश होगा. तो ता था दा हो गया. बात मत करो मैं जब बोल रहा हूं.
तो जब ता था तो उसका दा हो जाएगा, का होगा तो गा हो जाएगा, चा होगा तो जा हो जाएगा। समझ गए? तो तृतीय वर्ण, तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, उपसर्गाद रिकारात, रिकारादो, तो रिकारात है वो, ता को दा हो गया है। अवर्णांतात, वो ता को दा हो गया। ठीक है, इस पंचमी एक वचन। अवर्णांतात उपसर्गात रिकारादो धातु परे वृद्धि रेखादेशो वा स्यात्। See, there is a very interesting thing here, everybody. Upasarga dhriti dhatou we have studied. Okay? Upasarga dhriti dhatou says that if such and such, same condition in both the cases, same exactly. But that says that if such condition happens, you can only do vriddhi. But va supya pishalehe, supya pishale, pishal was a rishi. Pishal rishi has given one sutra. I mean, he just mentioned his name. Supi Pishale. Supya Pishale. Supi means Vibhakti. Subvibhakti. Va Supya Pishale, according to this sutra, avarnantad upasargat rikarado dhato pare vriddhi rekadesho va syat. So it is the Atidesh sutra. It is actually indicating the previous sutra, that if this same situation happens, according to Pishal Rishi, you can do one time Vriddhi Sandhi or you cannot do also. That means you can do Guna Sandhi also. So this Sandhi is saying either or. You can do that or you don't do that. But first sutra said you can only do Vriddhi Sandhi. समझो इस बात को। वाह से आप बोल दिया मतलब वो कर सकते हो। हाँ, नहीं देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, जो उपसर्गाद ऋति धातु है, ये कह रहा है ऐसी स्थिति अगर होती है कि अवर्णांत कोई उपसर्ग हो पहले और बाद वाला जो है वो रिकार से प्रारंभ होने वाला कोई धातु हो, ऐसे में आप सिर्फ वृद्धि संधि का ही एकादेश किया गया। यहां तक क्लियर सभी को? यस यस। जिनको क्लियर है सभी अनम्यूट करके बोलो तो। यस प्रभु। यस हाँ ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। हाँ क्या हो रहा है? मुझे दोनों क्लियर हो गए, पहला भी और दूसरा भी। हाँ, अब देखिए सेकंड सूत्र क्या कह रहे हैं कि वा सुप्या पिशले है। देयर इज अ सेंट कॉल्ड पिशल ऋषि। ही सेड वा means either or. If the same condition, see both the sutras are saying the same words. Avarnantat upasargat rikarado dhato pare vriddhi rekadesho va syat. That means if the same condition happens, you can do either vriddhi sandhi or you can do guna sandhi as an alternate. So he is giving an option, but the previous sutra was saying only vriddhi sandhi. So why then we should just take this supya pishale? We should leave the upasarga dhriti dhatu or not? Yes, tell me. I was about to ask this. Yes. Ask you, huh? This question should come. Yes. That means if you look into the sutra, vritti or vartik, they will clear that if the rikar dhatu starts with a ri varna, it will only get vriddhi. But if the rikaranta dhatu starts with lri varna, LRI, lri varna, then there are two options available. Because ri and lri are ekatma. They are considered twins. Because lri is only short, it does not have long form. So when lri becomes long, it becomes long ri itself. Okay, this we have taught you at the beginning. So, but still, Li is different than Ri. So the system they applied is applicable for Ri Varna. But when Ri is involved, then you can use Va Supya Pishalehe. And with this, you can make one time Upal Kariyati or Upal Kariyati. Two forms you can make. That is the indication. Okay. Is it clear for everybody? Clear. Yes, yes, yes. अच्छा,
Now number 3, Akshauhini. Akshauhini. This we know. Akshauhini was the Sena which Duryodhan got. And Arjuna got Krishna at the time of this Kurukshetra Yuddha. So Akshauhini is a special kind of instruction. Aksha plus Uhini. So Aksha plus Uhini can be Akshauhini also or not. It can be a Guna Sandhi or not. This is Guna Sandhi. It's a Guna Sandhi. Yes. It's totally a Guna Sandhi. There is no question of Vriddhi Sandhi. Because Vriddhi Sandhi is A-I, O-O and real re. So Uhini is typical Guna Sandhi. But there is a sutra. See, this sutra, there are certain this sutra is only applicable in this case. Out of 4,700 sutras of Panini Vyakaran, this sutra is typically for this Akshauhini Shabda. Understand? You understand? So it says Akshad Uhinyam Upasankhyanam Va. Aksha Shabdat Uhini Shabde Pare Vriddhi Rekadeshah Syat. Vriddhi Rekadeshah Syat. They are not saying Va here. They are saying Vriddhi Rekadeshah Syat. So when Aksha Shabda is there, here Aksha Shabda is there and Uhini Shabda is there. When Aksha and Uhini, long Uhini Shabda is there, you can only do Vriddhi Sandhi. There is no other option. समझ गए सर्वदेव दास? जैसे कलो नास्तैव 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 गतिरन्य था, वैसे ही अक्षौहिणी में भी और कोई ऑप्शन केवल बचा वृद्धि संधि होगी। अब देखिए, ऊ का तो वृद्धि संधि होता नहीं ना। ऊ का वृद्धि संधि होता है क्या? नहीं है ना। इक, ऊ इज इन अंडर इक, दीर्घ ऊ। हाँ, ऊ इज अंडर इक विच इज गुण संधि। लेकिन ये देखिए, ये कैसा सूत्र है? ये विशेष आदेश हो गया। इसको अतिदेश सूत्र कहते हैं। अतिदेश माने आई एम सेइंग दैट ऑल द वैष्णवस आर इनवाइटेड and you can invite your driver also who is not a Vaishnava. You understand? जी. So all the Vaishnavas who are coming with their family, they are all invited, but I will have a separate arrangement for your drivers. So that is Atidesh Sutra. This is how do you call it? This is like crossing its limit. Uhini is not a part of Vriddhi Sandhi, but Akshadu Hinya Upasankyanam Va. Upasankyanam means Sankhya Sabd mein prayukt hone wale, when it is used as a number, like Akshauhini is a particular number of soldiers. You got it? But yes, Prabhu. हाँ बोलिए। हिन्या का मतलब क्या हो? हिन्या उपसंख्यानम तो हो गया। अक्षादु हिन्या एक साथ आएगा क्या? नहीं, साथ वर्ड है। अक्षात उहिन्याम, अक्ष और उहिनी है ना। अच्छा, हाँ। उहिनी का मतलब क्या होता है? उहिनी का मतलब है ना, उहिनी एक संख्या है। अक्षौहिणी हो गया उससे। उससे अक्षौहिणी है। तो उहिन्याम एक संख्या, वो भी न्यूमेरिकल है। हाँ, वो भी न्यूमेरिकल है ना। हाँ, न्यूमेरिकल है। हाँ, तो एक चीज क्लियर हो गया। वन थिंग इज क्लियर कि if this same Akshauhini is not used for soldiers as a number, then this sutra will not be applied. Understand this. When they said Upasankyanam and see inside the bracket they said Va. देखो इसको, समझ गए? सूत्र में वा कहीं नहीं लिखा है। जैसे पहले वाले सूत्र में सूत्र के वृत्ति में ही वा लिखा था, वा स्यात्, लेकिन इसमें वा ब्रैकेट में लिखा है। माने Uhini Shabda, if it is used for the purpose of a number,
certain number of soldiers or whatever, then only this Vriddhi Sandhi will happen. But Uhini Shabda, because one Shabda has many meanings, but this Uhini is used not for counting purpose, then you can do Guna Sandhi. Is it clear? Yes. Yes. So this is the thing. This is a very subtle thing. Grammar is not so difficult. नंबर के लिए काउंट होगा तो तब होगा ये वृद्धि हाँ संधि। हाँ हाँ। अगर नंबर के लिए काउंट नहीं होगा तो वो गुण संधि नहीं हो सकते। ऐसा ही एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, कोई बता सकता है? ऐसा ही सूत्र हम पढ़ चुके हैं 2 दिन पहले। संख्या हाँ, वांतो ई प्रत्यय में हमने पढ़ा था कि अध्व परिमाणे च, अगर यकार से इफ देयर इज ए प्रत्यय व्हिच स्टार्ट्स विथ या, which is an exception, ya is a consonant, but if it is using for adhva pariman for the sake of a distance measurement, but if this, that means if the same word, same pratyaya is not trying to indicate any distance measurement, then the rule will not be applicable. You understand? That means if I am saying that saffron color brahmacharis will be invited, so that does not mean that white brahmacharis are not brahmacharis. आई बात समझ में? white cloth are also brahmacharis, but if I am saying saffron cloth brahmacharis will be invited, that means I am excluding the white cloth brahmacharis, but does not mean that they are not brahmacharis. Is it clear? Yes. So when they are saying कि अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम वा, कि उहिनी, अक्षा और उहिनी इन दोनों शब्दों का मेल हो, लेकिन उपसंख्यान अर्थ में, उपसंख्यान माने दे आर ट्राइंग टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर नंबर, ए काउंट, देन ओनली वृद्धि संधि विल हैपन. One thing is not written here, that's why Vararuchi has to write Vartik, because this vritti is also not making clear. Not all immature students will understand. That means they are saying if the same condition is happening somewhere, but these are not indicating any particular number, then there is a scope of Gunasandhi. So if you see somewhere that Uhini Shabda is added, but they have done Gunasandhi, then you will come with the book, oh, but you taught us that Akshad Uhinyas Upasankhyanam, we can do only Vriddhi. But here there is Gunasandhi. That means there are apavadas existing where they have not done Vriddhi Sandhi, they have done Guna Sandhi. Such places are also there. Clear? Yes. I'm happy that all of you, this is the today's topic is very complex, but all of you are understanding. I'm very happy for that. प्रभु जी, इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं? हम लोग अंडरस्टैंडिंग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप जो है ना बढ़िया से समझा रहे हैं। हमारी योग्यता नहीं है, आपकी योग्यता है। नहीं, आप में भी पात्रता होनी चाहिए। एक उपनिषद में एक कहानी है, देयर इज ए स्टोरी इन उपनिषद, इट सेज दैट द मिल्क ऑफ ए लायनेस, गाय का दूध तो देखा है, भैंस का दूध भी देखा है, सिंहिणी का दूध देखा है कभी? सिंहिणी का दूध, तो ये व्याकरण है सिंहिणी का दूध, द मिल्क, द ग्रामर इज द मिल्क ऑफ ए लायनेस, एंड ये सिंहिणी का दूध सिर्फ स्वर्ण पात्र में धारण किया जाता है। ओनली ए गोल्डन पॉट कैन स्टोर द मिल्क ऑफ ए लायनेस, अदरवाइज इफ इट इज नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड, the milk will be destroyed immediately. You understand? So I am dogdha, I am milking the cow, milking the lioness, and you are the golden pot, that you are the receptacle. So anyway, these are very critical things, and very critical, like students take 2-3 months to understand. You know, they study, they do the siddhi, but still this question remains after finishing the grammar also. So each point I'm unfolding,
I'm sure that you will forget tomorrow, but still the samskara will remain. So when, like Vantoi Pratyaya taught 2 days before, you forgot. Yam and Yuti, Gavyam and Gavyuti, these are two exceptions, even though they are starting with Yakar, which is a consonant, which is not a vowel, but still Echo Yavayavaha is happening because there is Vantoi Pratyaya Sutra. You understand? But there is a condition that this Yam or Yuti Pratyahar has to indicate Adhva Parimane. That means a distance measurement. Gavyuti, like we say Yojan, Kos, Panchakosi Parikrama. Similarly, we say that the distance between Mars and Mercury is 8 million Gavyuti. So this is used for Adhva Pariman. So if this Yam Yuti is used for a distance measurement, then only this rule Vantoi Pratyaya is applicable. Got my point? So when this topic came, Akshadu Hunyam Upasankhanam, it reminds you of that sutra. Grammar is such a thing, unless somebody continuously practices. There are many good students also who studied very nicely, they understood, but after finishing the study, they forgot everything. This is a very common thing in grammar, I'm telling you. You understand? So constant practice and charcha, discussion is very much important. चलो तो ये हो गया। जी, जैसे आपने ओहिनी का उदाहरण बताया कि इसको संख्या के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तब गुण संधि हो सकता है, तो उसका कोई उदाहरण है प्रभु जी जो उदाहरण बता सकते हैं? नहीं, वो पाणिनि ने नहीं दिया है तो हमको कैसे पता चलेगा? हो सकता है कोई महाभाष्य आदि में कहीं पे दिया होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं मतलब कहीं पे हो सकता है कि ऐसी स्थिति अगर आ जाए। देखिए पिताजी क्या कहते हैं, जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, ठीक है, when the father divides the property between the children, what he says that see, I have given you this, but still if you guys fight, then there is a second option. ऐसा होता है कि नहीं? शरणागति दीदी, ऐसा होता है कि नहीं? समझ में नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया? हाँ, तो एक सेकंड ऑप्शन कि देखो इनके बाद भी अगर कुछ होता है तुम्हारी छोटी बहन को, तो मेरे ये फिक्स डिपॉजिट है उसको दे देना, ऐसे हम कहते हैं ना। तो वो अगर ऐसा होता है, क्योंकि व्याकरण में क्या है कि जितने शब्द बने हैं व्यासदेव के द्वारा वही पर्याप्त नहीं है, कोई अच्छा वैयाकरण होगा तो नया शब्द भी बना सकता है वो। Sanskrit is the only language which is limitless. You can create new words. You can create new धातुस. उणादि गण एक आएगा जिसमें आप नया धातु बना सकते हैं. New verbs you can create. So there is always an option of a new member in the family. So that's why the sutras, they say that in this particular case only I am giving because Vyasdev has used. But if someone claims that I want to do Guna Sandhi and it is possible, that space has also been left by Panini Rishi. आई बात समझ में? Yes, इसका क्या है कि प्रभु अब जो अब पढ़ा रहे हैं अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि भारत में बड़ा नेग्लेक्ट किया गया है। माने बच्चों को अगर ये कंपल्सरीली पढ़ाया जाता, जैसे हम लोग भी आगे भी पढ़ते हैं ठीक से, तो ये न्यूरॉन्स बहुत जबरदस्त एक्टिवेट हो रहा है इससे। ये ब्रेन को इतना शार्प बना देता है ना। अच्छा, दूसरी बात, व्याकरण, those who are studying grammar regularly, they cannot have any depression or any other mental disorder. डिमेंशिया सब कुछ नहीं है ओल्ड एज में जो होता है। हाँ, तो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। लोग आजकल वो क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उससे अच्छा इसमें इन्वेस्ट कर दें। म्यूचुअल फंड, शेयर, कंपाउंड्स। हाँ, so actually ना, when I was here,
there's this what we call this भूलने की आदत होती है ना, इसको क्या कहते हैं, एक इंग्लिश में बीमारी है, मैं भूल गया उसका नाम, दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं कि अगर आप एक ओल्ड एज में जैसे अबव 50 इफ यू स्टार्ट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, इधर इधर ये लोग बोलते हैं, इधर मतलब इस तरफ कि अगर आप न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको वो बीमारी नहीं आती। अल क्या नाम उसका, अल्केमेज कुछ ऐसे करके ना, यस अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, वो नहीं होती। तो अभी हमारे पास संस्कृत है तो ये होने नहीं देती। हाँ, इससे उत्कृष्ट मैंने तो देखा प्रभु, हमारे फैमिली में अल्जाइमर डिजीज, मैंने एक मौसा जी, वो जैसे ड्राइंग रूम में जाना हो तो बाथरूम में घुस जाते थे, इधर जाना तो उनको समझ नहीं आता था कहाँ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। टुडे वी स्टडीड उपसर्गात् ऋति धातौ वा सुप्यापिशलेः अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। These 3 sutras we have studied very clearly, and you have to revise it. Tomorrow we will read Swadi re rinoho. Tomorrow Ekadashi Prabhu. Or tomorrow is Ekadashi, so day after we will study. So now you understood, Pradipta Gauranga, when I said that this Guna Sandhi and Vriddhi Sandhi is very simple. I said you will understand later. Now you understand? Yes. You said this is nothing. We will just understand it. No, gradually my brain is activating this. Totally blank. शुरू में तो blank था, अब धीरे धीरे वो हो रहा है और 3-4 महीने में तो बहुत अच्छा फ्लुएंसी आ जाएगा। हाँ, so actually grammar is not so difficult. The exceptions, subdivisions and their subdivisions of grammar makes it difficult. See, if it was simply Guna Sandhi and Vriddhi Sandhi, there was no issue. But they put re and re, like between India and दोबारा डाल दिया उसमें, हाँ, अपवाद के रूप में। Between India and Pakistan there is Kashmir issue. so re and re is like such an issue that either it can go to Guna Sandhi or it can go to Vriddhi Sandhi. It's a part of both the game. That makes complex. Now what happens if Rikar is there added with Rikar starting dhatus, then it will only get Vriddhi Sandhi. But if it is Uhini Shabda, Sankhya Vachi, then you will only have Vriddhi Sandhi. You understand? And Akshad Uhinyam, Uhini Shabda, then it says, if it is Rikaranta Dhatu and the Upasarga is ending with A, then you can do Va Supya Pishalehe, because Pishal Rishi has done Vriddhi. He has said Vriddhi you can do as an alternate. That means you can do Guna Sandhi also. But the same Vritti, Avarnat, Upasargat Riti Dhatu and Vasupya Pishale has the same Vritti. Exactly. See, Avarnat Upasargat Rikarado Dhatu Parivriddhi Rekadesha Syat. Avarnat Upasargat Rikarado Dhatu Parivriddhi Rekadesha Vasyat. Only difference of Vasupya Pishale, there is only extra Va. Va means or, either or, as an alternative. But there is, apart from this, between the vritti of these 2 sutras are different, but the vrittis are exactly the same. You understand? So these are very interesting things, and the more you practice it, and it's a very good engagement of your senses and your mind. And my Guruji used to say that if somebody completes this Siddhanta Kaumudi, all the sutras, and this Chirantani has everything. That's why the book is so thick. And this is the very easy way to understand, go through the sutra. But if I would have started teaching you from Laghu Siddhanta Kaumudi, it's not that easy. But Chirantani is a very good way to enter into this field, domain. Okay, so after Chirantani is completed, then we will take a look of Laghu Siddhanta Kaumudi
There you will understand very easily, very quickly. After Laghu Siddhanta Kaumudhi, maybe side by side, I will start teaching Bhagavad Gita also. So later on, I will teach for 1.5 hours. Okay. Now I'm teaching 1 hour, 1 hour 15 minutes. But then I have to teach 45 minutes, 45 minutes. Then all of you will become Pandits. Okay. Okay. So Hare Krishna chanting. I'm turning or muting myself. I have a call. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vanchakal